Hi guys, am I audible? Am I audible to all of you? Just drop a yes in the chat box if my voice is audible to you all. A very good evening to all of you. Okay, great. And I hope I am visible as well. How are you all doing? I hope you all are doing well. A very good evening to you guys. We are going to have an interesting session today wherein we are going to solve a passage, a reading comprehension whose difficulty level will be anywhere between easy to moderate. But I'll be taking quite a different passage today, right? Because keeping this one thing in mind that your CAT examination is near, and also you guys are still left to I understand that you guys still are left to give a lot of mocks and frame a lot of strategies. So today I have came up with such a passage that's quite different to you, because ऐसे passages CAT की examination में बहुत कम आते हैं, right? So this is basically a fact-based passage, but because such passages can be asked, today we are going to talk about a lot of strategies to deal with these passages if at all you encounter them in your examination. ओके, सो एक फैक्ट बेस्ड पैसेज हम सॉल्व करने वाले हैं, एंड इस फैक्ट बेस्ड पैसेज को सॉल्व करने के लिए यू नीड टू यूज अ कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच, which means you need to retain a lot of important details in your mind before going to the questions. You need to make sure कि आप एक मेमोरी मैप, एक मैप बिल्डअप करो अपने माइंड में, एंड that's known as a mental road map, जिसमें you tend to remember a lot of most important details from every single paragraph in your mind, right? And why is this important? Why is this mental map making important? So that you do not have to go back to the passage again and again and again to solve the questions. Because if you do this, right, if you keep on going back to the passage for every single question, you'll probably lose a lot of time. You're going to waste a lot of time, right? So in order to avoid this, you guys will make sure that you're remembering the most important details in your mind while reading the passage, right? So I'm going to keep a passage in front of you now. The reason why I'm calling this passage a different one is because इस पैसेज में बहुत सारे फैक्ट्स हैं. सेकेंड रीजन इज दैट इस पैसेज में आर्ग्यूमेंट्स हो रही है बिटवीन टू टू थ्री पीपल, राइट? तो जब लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होती है ना, आपके लिए याद रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है. ओपिनियंस ऑफ डिफरेंट पीपल, प्रेमिसेस सेट बाय डिफरेंट पीपल, कंक्लूजन्स ऑफ डिफरेंट पीपल. And in order to solve questions on the basis of such a passage, it's extremely important for you to keep all these things in mind कि कौन सा question कौन से person के opinion के basis पे है, right? So I'll be giving you a few minutes to read this passage. Take 5 to 7 minutes or whatever time you need to read it, and then let me know once you're done. We will understand the passage together, but before we understand the passage, I would really want you guys to solve the questions by yourself, right? So एक बार आप passage पढ़ लो, उसके बाद I'm going to show the questions to you. Let's see how it goes. Let's see if you're able to crack the questions. Right, I'll be keeping 3 questions in front of you, right? And I'll be giving you 1.5 minute to solve every single question. But the trick here is, or the key here is that I'm not going to show you the passage again. मैं आपको पैसेज वापस नहीं दिखाऊंगी, आपको चीज़ें याद रखनी है, एंड अकॉर्डिंग टू वट एवर यू रिमेंबर यू आर गोइंग टू सॉल्व द पैसेज. Okay, so I'll be showing you the passage for, let's say, 5 minutes, 3 to 4 minutes, whatever you want, and then I'll be showing you the questions. You'll solve the questions, you'll remember the answers, or you'll note them down somewhere, and then we'll understand the passage together, and then we'll again solve the questions, and you guys can verify your answers later on with the answers that you have chosen. I hope you guys are excited for today's passage. Just can I please have a yes in the chat box if you guys are excited and if you guys are ready to move forward? Yes, a yes from all of you, please, before I show you the passage. Yes? Okay, great. So the passage will be right in front of you in a few moments, in next 5 seconds. Start reading
and let me know once you are done. I hope you guys can see the passage clearly. Start reading this passage and let me know once you are done. Come on. Can't see the last line. Um, just give me a moment. Okay, wait. Just a moment. I think it should be better now. Just let me know if it's visible now. It's not? Okay, wait. I think it should be visible now. अब तो दिख रही होगी clearly. Yeah? Okay. Okay, Khushi. Once you're done with the passage, please let me know. एक बार पढ़ लो, so just post a yes in the chat box. Come on. Done? What about others? Are you guys done reading it? Yes?
I need a yes from all of you before I show you the questions. Done? Okay, fine. I'll be showing you the questions now, and I'll be giving you 1 minute or 1.5 minutes for every question. I'll be keeping three questions in front of you. Okay, please be honest to yourselves and don't take a screenshot of the passage because I don't want you to go back to the passage. Okay, I want to check if you guys are good at remembering information or not. So don't check the passage again, just attempt the questions according to whatever you remember. Okay, wait a minute. Okay, fine, a few more seconds. I can wait 30, 40 more seconds and then I'll show you the question. Come on. Done? Okay. First question will be right in front of you. Come on, start. I hope the question is visible to all of you. Start attempting this and let me know once you're done. Do not drop your answers in the chat box right now. Just keep your answers with you, okay? I don't want answers right now. I'll ask you after I'll ask you the answers for the answers of the questions once we have understood the passage. Okay? अभी answers chat box में मत डालना. Start attempting this and let me know once you're done. Last few seconds, guys, and then I'll change the slide. Don't post the answers right now, please. I'll make you understand the passage and then I'll ask you the answers. Don't post them right now. Done? Okay, I'm showing you the next question now. Come on, start. I hope you guys can see the second question. Start reading and start attempting it. Come on. I'll change the slide in next 1 minute and I'll show you the last question. फटाफट से attempt कर लो. Come on, you don't have much time.
Okay, I'll be showing you the third question now. I hope you guys are done with this. I'll be showing you the third question in next 15 seconds. Come on, start. No, B and D are not same. They are different. But anyway, I'll explain that to you later on. Right now, showing you the third question. Come on, start. I understand questions are slightly tricky and we'll definitely understand every single question together. Don't worry about that. Right now, just give your best, okay? Start attempting the third question. I hope it's done. Can we just go to the passage now? Yes? Is it done? Just drop a yes in the chat box if you guys are done with this question as well. This is the last question. Done? Okay, fine. Let's go to the passage. Now, again, all of you might wonder, just once again, I want to tell you this one thing. Most of you might wonder that why are we solving such a passage? I'm again trying to tell you that I'm just making you ready for the cat's unpredicted questions. सो अगर कैट में ऐसे कोई पैसेजेस आते हैं यू मस्ट नॉट गेट सरप्राइज्ड ओके सो आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर सच पैसेजेस एज वेल वैसे तो आपने काफ़ी सारे टाइप के पैसेजेस कर रखे होंगे साइकोलॉजी बेस्ड पैसेजेस इकोनॉमी बेस्ड पैसेजेस सो आई जस्ट वांटेड टू कीप अ डिफरेंट पैसेज इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू गेट योर सेल्स रेडी टू यू नो सॉल्व सच पैसेजेस एज वेल यू शुड नो कि अगर ऐसे फैक्ट बेस्ड पैसेजेस आते हैं कैट के एग्जाम में तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं ठीक है कम ऑन लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द पैसेज एक बार पैसेज समझ लेते हैं उसके बाद विल गो टू द क्वेश्चंस ओके speaker A. So यहाँ पे there are three people. Okay, the argument is happening between three people. We are going to understand this argument and then we are going to understand the conclusion. Okay. So speaker A है. Speaker A says, have you ever picked up a self-help guide and wondered why someone would bother to write a book full of mind-numbingly dull tips which would not help anyone? सो स्पीकर ए का ओपिनियन क्या है कि क्या कभी आपने कोई सेल्फ हेल्प गाइड बुक जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती है ना जहाँ पे लोगों के सजेशंस होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए वी शुड वेक अप अर्ली वी शुड एक्सरसाइज वी शुड डू दिस वी शुड मेडिटेट वी शुड गेट आवर सेल्स इन्वॉल्व इनटू द पॉजिटिव थॉट्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ ओके सो स्पीकर ए बोल रहा है हैव यू एवर पिक्ड अप सच अ सेल्फ हेल्प गाइड एंड वंडर्ड व्हाई समवन वुड बॉदर टू राइट अ बुक फुल ऑफ माइंड नंबिंगली डल टिप्स सो स्पीकर ए के जो स्पीकर ए है उनके अकॉर्डिंग सेल्फ हेल्प बुक्स यू नो डोंट हेल्प यू मच एंड दे आर जस्ट फुल ऑफ माइंड नंबिंगली डल टिप्स एंड ही आस्क्स कि क्यों कोई ऐसी बुक्स पढ़ेगा जो किसी को हेल्प ही नहीं कर सकती है if so, you might not be alone. Evidence suggests that the general populace is getting sick and fed up of every Tom, Dick, and Harry releasing their own tips on how other people should improve their lives. So, अगर आप भी स्पीकर ए की तरह सोच रहे हो that why would someone read such a self-help book that's not helping any one of us, then you're not alone because a lot of people are now fed up with such self-help guides.
राइट, जो कि एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन गेट अप एंड राइट इट, राइट, बिकॉज ये बहुत कॉमन है आजकल। हर किसी को देखो, सब लोग सेल्फ हेल्प बुक्स लिख रहे हैं, राइट। So that's what speaker A thinks, that because any Tom, Dick and Harry can write it, it is certainly getting boring, and everyone is getting sick and fed up of all these kinds of tips and books that these people are writing. Human beings are unique. According to speaker A, human beings are unique. We certainly are not one size fits all, and anyone who treats it that way certainly is not qualified to write a book on how to help people, राइट। सो ह्यूमन बींग्स स्पीकर ए के अकॉर्डिंग काफी यूनिक है, सब लोग अलग है। एंड स्पीकर ए को लग रहा है कि यू नो if someone writes a self help book, then he certainly is not qualified to write it, because if that person does not understand the fact that human beings are unique, तो शायद उसमें capability ही नहीं है ये चीज़ समझने की that self help books are not going to are not going to help everyone, राइट। दे नॉट गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल। क्यों? क्योंकि सब लोग अलग है, सबको अलग अलग टाइप की हेल्प चाहिए। सो इफ़ यू जस्ट मेक और राइट वन सेल्फ हेल्प बुक, तो वो सबको अप्लाई हो ही नहीं पाएगी, right? That's why speaker A says that sab log alag hai, human beings are unique, and we certainly are not one size fits all, and anyone who treats it that way certainly is not qualified to write a book on how to help people. Do I need to be told that I should brush my teeth every day, or the best way to roll out of the bed in the morning? Absolutely not. That isn't self help, but fleecing readers who want good quality advice. सो ये सारी चीज़ें कौन बोल रहा है? स्पीकर ए बोल रहा है। अब हम स्पीकर बी पे जाते हैं। सो स्पीकर ए का कंक्लूजन क्या था? दैट वी शुड प्रॉब्ली नॉट बी रीडिंग दीज सेल्फ हेल्प गाइड्स, बिकॉज एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन राइट इट, एंड दिस वॉज नॉट गोइंग टू हेल्प अस एट ऑल, राइट। स्पीकर बी की बात आती है, तो स्पीकर बी क्या बोल रहा है? दैट द राइज ऑफ सेल्फ पब्लिशिंग मीन्स दैट अ ह्यूज नंबर ऑफ ऑथर्स हैव फाउंड अ वे टू पुट द वॉइस आउट देयर when they would not have had this chance before, right? So speaker A was talking about self-help books, right? But speaker B is talking about self-publishing. ओके, सेल्फ पब्लिशिंग क्या होता है? अगर आपको आपकी बुक के लिए कोई पब्लिशर नहीं मिल रहा है, तो आप आपकी बुक खुद पब्लिश कर सकते हो। ओके, सो अकॉर्डिंग टू स्पीकर बी, ये जो राइज आ रहा है सेल्फ पब्लिशिंग में, इट मीन्स दैट अ ह्यूज नंबर ऑफ ऑथर्स हैव फाउंड अ वे टू पुट देयर वॉइस आउट देयर when they would not have had this chance before. While some people feel that this has led to the saturation of the market, I think it's wonderful. It would be extremely conceited for me to sit here and claim that my voice is better or more relevant than yours, and vice versa. राइट। सो सेल्फ पब्लिशिंग का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है दैट नाउ अ नंबर ऑफ ऑथर्स हैव फाउंड अ वे टू पुट देयर ओन वॉइस आउट देयर। अगर किसी की बुक कोई पब्लिशर पब्लिश नहीं भी करता है, तो आप खुद वो खुद अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं, एंड अपनी वॉइस जो है वो बाहर पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, राइट। नाउ the point is, speaker B says that it's definitely wonderful that now people are having this freedom to get their voice out there among people. It would be extremely conceited. What do you understand by the word conceited? Conceited is a person who is narcissistic, who feels that he is correct and everyone else is wrong. So it would be extremely conceited for me to sit here and claim that my voice is better or more relevant than yours, and vice versa. Everyone has something important to say, and if they want to say it, where is the harm in giving them the platform to do so? So speaker B says, अगर कोई अपनी book जो है वो खुद publish कर भी रहा है, then it's good for them, right? At least they are able to spread their voices among people, right? अब स्पीकर सी की बात आती है। स्पीकर ए की बात हो गई, स्पीकर बी की बात हो गई, अब स्पीकर सी की बात करते हैं। स्पीकर सी सेज इट्स फेयर टू से दैट सेल्फ पब्लिशिंग हैज क्रिएटेड क्वाइट अ लिटरेरी कॉनंड्रम। कॉनंड्रम मीन्स कंफ्यूजन। क्योंकि स्पीकर सी के अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि सेल्फ पब्लिशिंग ने काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया है फॉर कंज्यूमर्स एंड एक्सपर्ट्स अलाइक। On one hand, you could argue that it's essential for us to give people a voice by opening up the publishing world um,
to those, by opening up the publishing world to those who could not access it before, we have positively smashed down the borders so closely governed by the big publishing houses, complete with watchtowers and trained literary snipers. Right? But on the other hand, this means that we now have a literary market which is absolutely saturated with what is, in all honesty, mediocre talent. So speaker C क्या बोल रहा है, that there are two sides to this. सेल्फ पब्लिशिंग ने एक पॉजिटिव चीज की है, एक खराब चीज भी की है. पॉजिटिव चीज ये है दैट ऑब्वियसली पीपल आर नाउ एबल टू स्प्रेड देयर वॉइसेस अमॉन्ग पीपल. राइट, सो ये एक पॉजिटिव चीज़ है दैट लोग अपने खुद के ओपिनियंस बाहर लोगों में सेल कर सकते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, दिस मीन्स दैट वी नाउ हैव अ लिटरेरी मार्केट विच इज एब्सोल्युटली सैचुरेटेड विथ व्हाट, इन ऑल ऑनेस्टी, मीडियोकर टैलेंट. मीडियोकर यानी एवरेज टैलेंट. सो बिकॉज कोई भी अपनी बुक सेल्फ पब्लिश कर देता है, लोग असली टैलेंट को पहचानना भूल गए हैं. राइट, एनी सच बुक दैट पीपल कम अप विथ, आप बहुत सारी बुक्स ऐसी लाइब्रेरीज में देख सकते हो. राइट, बुक स्टोर्स में देख सकते हो. एंड इवन इफ यू आर रीडिंग दैट बुक, यू आर नॉट नेसेसरली श्योर दैट that particular book is written by a person having good talent or a good sense of humor. ये mostly mediocre talent होता है जो प्रूव भी करता है. They are also putting an evidence in front of us that Amazon search self-help, and I can almost guarantee you that the first 10 books in the search rankings will give you more or less the same tips. अगर आप Amazon पे सर्च करते हो सेल्फ हेल्प बुक्स, तो जो ऊपर की टॉप 10 बुक्स होगी उनमें कहीं ना कहीं हर एक बुक में सेम टाइप का कंटेंट होगा, सिमिलर कंटेंट होगा, सिमिलर टिप्स होगी. Right? Just arranged in different order and with a different voice narrating them. Likewise, poor quality fiction books are becoming more and more the norm. Without the need of a serious publisher to check them over, people are releasing books that have not been proofread into the marketplace, further devaluing the achievement of a published book. कोई भी now, because लोग अपनी बुक सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं, ऐसे पब्लिशर्स नहीं है. पहले पब्लिशर्स होते थे तो क्या होता था, आई मीन अभी भी होते हैं, बट नाउ पीपल हैव आल्सो गॉट द फ्रीडम टू सेल्फ पब्लिश देयर बुक. सो अगर लोग अपनी बुक खुद पब्लिश कर देते हैं तो वो प्रूफ रीड नहीं कर पाते पब्लिशर्स. राइट, पहले क्या होता था, पब्लिशर्स बुक्स को प्रूफ रीड करते थे, सो हमें श्योरिटी मिलती थी कि अगर पब्लिशर ने पब्लिश किया है, अगर इतने बड़े अच्छे से पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश किया है, तो ये बुक डेफिनेटली अच्छी होगी. बट अब अगर कोई भी अपनी बुक सेल्फ पब्लिश कर रहा है तो हमारे पास वो डिफ्रेंशिएटिंग एलिमेंट नहीं है जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सके कि खराब बुक्स कौन सी है, अच्छी बुक्स कौन सी है. Right? So that's what they say, that the market has been saturated with mediocre talent, and without the need of a serious publisher to check them over, people are releasing books that have not been proofread, further devaluing the achievement of a published book. ऐसी books जो mediocre होती है वो अच्छी books को भी devalue कर देती है जो अच्छे publishers ने publish की है. Right? There is a reason that big publishing houses are big publishing houses. They know how to spot talent and they know how to reject it. We have significantly displaced the commanders of the literary kingdom, but do the common folk really know how to rule? So basically, the whole passage focuses upon, the argument that's all about whether self-help books should be there or whether self-publishing should exist. So self-help books, self-publishing, in sab ke pros and cons diye hain, and these opinions are given by 3 different people kept in front of us. I hope the passage is clear to you guys. Can I please have a yes in the chat box अगर passage आप लोगों को अच्छे से समझ आया? Yes? उसके बाद we can just move to the questions. A yes from all of you if you guys have understood the passage. Yeah? And now I'll be giving you a few moments to write down your answers in the chat box. If you want to change your answers, you can. लेकिन जब एंड में मैं आपको पूछूंगी कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, तो आप आपके ओरिजिनल आंसर्स से चेक करके बताना. ओके, ठीक है. लेट्स ट्राई द फर्स्ट क्वेश्चन. Which of the following best sums up the way in which 3 speakers feel towards self-help books? And I'm 100% sure that most of you, in fact 90-95% of you guys, would not have been able to crack this question correctly. ये question 95% लोगों का गलत हुआ होगा, I'm pretty sure. And if you're being honest, just let me know if your answer was correct or not. Okay? पहला ऑप्शन देखते हैं. Speaker A feels that self-help books are a waste of money and give generic advice. Fine, you can say that, yes.
Speaker B feels that self-help books are important as they provide authors with a voice. Absolutely not. आप लोगों को लगा होगा कि स्पीकर ए आई मीन सॉरी स्पीकर बी एक सजेशन दे रहा है सेल्फ हेल्प बुक्स के लिए, बट स्पीकर बी एक्चुअली सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा है. Speaker B never talks about self-help books. He's just talking about self-publishing. Okay, if you want, you can just go back to the passage and just read this paragraph of Speaker B. स्पीकर बी का पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे खत्म होता है. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कहाँ सेल्फ हेल्प बुक्स की बात हो रही है? स्पीकर बी does not at all talk about self-help books. He is just talking about self-publishing, and there is a difference between self-help and self-publishing, and that's why you definitely can eliminate option A as well as option C, राइट? बिकॉज ऑप्शन ए और सी दोनों में ही ये बात की है दैट स्पीकर बी कोई ओपिनियन फ्रेम कर रहा है या कोई ओपिनियन दे रहा है सेल्फ हेल्प बुक्स के लिए, but unfortunately he's not giving any opinion on self-help books. Okay, so going back to the question, can we easily now eliminate A option as an answer? Can we do that? Yes, because speaker B के बारे में जो लिखा है that self-help books are important, that's not given to us at all in the passage, so we eliminate A option. For the same reason, we will eliminate C option as well, because यहाँ पे भी लिखा है that speaker B feels that it's good for new authors to be given a voice, right? But speaker B does not talk about self-help books, and that's why we eliminate C option as well. अब बचते हैं बी और डी, राइट? अब बी और डी में से हमारे लिए एक टफ चॉइस होगी चीज़ों को कंपेयर करना. ओके, ऑप्शन बी सेज स्पीकर ए फील्स दैट सेल्फ हेल्प बुक्स आर अ वेस्ट ऑफ मनी एंड गिव जेनेरिक एडवाइस. फाइन, दैट्स ट्रू. Speaker B does not offer his opinion on self-help books. Absolutely correct. Speaker B does not. Okay. अब Speaker C के केस में देखते हैं. Speaker C क्या बोल रहा है? Speaker C feels that self-help books are a way of de-establishing publishing boundaries. Tell me one thing. If we are given a choice to choose any one option between B and D, हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे एज एन आंसर? B करेंगे या D करेंगे? इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा? अब बता सकते हो? अब तो इट्स आई थिंक इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. क्या करेक्ट हो सकता है आंसर, बी या डी? एनीवन? व्हाट कैन बी करेक्ट? विल यू चूज बी और डी? Okay, so I think most of you are saying that it should be D, right? Yes, and you guys are absolutely correct. It has to be D. Why D? What's the reason for choosing D? See, speaker B, option B में क्या लिखा है? That speaker C feels that self-help books are a way of de-establishing publishing boundaries. Speaker C self-help books के बारे में नहीं बोल रहा है कि वो पब्लिशिंग बाउंड्रीज को डी स्टैब्लिश करेंगे. वो सेल्फ पब्लिशिंग के बारे में बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन अपनी बुक खुद पब्लिश करता है तो वो बाउंड्री ब्रेक हो जाएगी, राइट? वो डी स्टैब्लिश हो जाएगी, राइट? सो यहाँ पे सेल्फ हेल्प की जगह अगर सेल्फ पब्लिशिंग होता देन इट वुड स्टिल हैव counted as the correct answer, but B doesn't make any sense at all, and hence we are going to choose D. ऑप्शन डी में क्या लिखा है? स्पीकर ए और स्पीकर के बी के बारे में तो सेम चीज है, राइट? बट स्पीकर सी के बारे में क्या लिखा है? दैट ही फील्स दैट सेल्फ हेल्प बुक्स आर ऑल एक्सट्रीमली सिमिलर इन कंटेंट, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू. स्पीकर सी ने इनफैक्ट एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अमेजोन पे अगर आप सर्च करोगे टॉप 10 बुक्स में काइंड ऑफ सिमिलर कंटेंट होगा. हर एक बुक में आपको सेम सिमिलर टिप्स दिखेगी, जस्ट अरेंज इन अ डिफरेंट ऑर्डर, नरेटिंग अ डिफरेंट वॉइस. So absolutely D option can be taken as a true option. It can be taken as the correct answer, right? So D option आपके लिए एक correct option की तरह act करेगा.
How many of you chose D option as the correct answer? किसी ने भी D choose किया था? Be honest and tell me if any one of you chose D as the correct answer. अगर D नहीं किया था तो कौन सा ऑप्शन चूज किया था? C? I think you guys might have chosen C option as the correct answer. Yes. Okay, that's nice. Yeah, you chose C. Okay, let's go to the next question now. Next question देखते हैं. Yes, I thought so. Most of you might have chosen C option because it looked like a correct answer. Yes. B. Okay, fine. ठीक है. Let's go to the next question. Which of the following statements most accurately reflects Speaker C's view on self-publishing? Speaker C self-publishing के बारे में क्या बात कर रहा है? That's excellent, Aryan. Very good. So Speaker C self-publishing के बारे में क्या बात कर रहा है? Let's try to understand. Option A says Speaker C believes that while de-establishing the publishing status quo is a positive step, this has opened the. अच्छा, tell me one thing. इस question में क्या choose किया है? मुझे सबके आंसर्स चाहिए फॉर क्वेश्चन टू. What have you chosen as the answer in question 2? Can you guys tell me? Can you guys write the answers in the chat box? Yes. Answers for question 2. What have you chosen? Okay, fine, Sunmeet. What about others? What did you guys choose for question 2? B. Okay, fine. Okay, Shika. Okay, Tarishi. Okay, Khushbu. Okay, Labiba, sorry. ठीक है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. स्पीकर सी का व्यू चाहिए, राइट? अब एक बार पैसेज पे जाके देखते हैं कि स्पीकर सी का व्यू क्या था. सी सिंपल सी चीज है. स्पीकर सी ने दो चीजें बोली थी. एक पॉजिटिव चीज बोली थी और एक नेगेटिव चीज बोली थी. पॉजिटिव चीज ये थी that people now are now able to put their voices among other people, right? But negative चीज ये थी that it has given rise to mediocre talent. अब कोई भी उठ के बुक लिख देता है, जिसके पास mediocre talent होता है वो भी. So we cannot differentiate between a good book and an average book, right? Or for that matter, a bad book. राइट. सो दैट्स व्हाट स्पीकर सी टॉक्स अबाउट. उनके दो ओपिनियन है. स्पीकर सी के दो ओपिनियंस है. एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. ये जो ऊपर के पैराग्राफ में बात की है ये एक पॉजिटिव ओपिनियन है, लेकिन नीचे के पैराग्राफ में पूरा नेगेटिव ओपिनियन है. सो हमें ऑप्शन में भी ऐसा ही कुछ देखना है कि एक स्टेटमेंट एक साइड पॉजिटिव हो, दूसरी साइड नेगेटिव हो. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डी ऑप्शन. डी से स्टार्ट करते हैं. स्पीकर सी बिलीव्स दैट डी एस्टैब्लिशिंग द पब्लिशिंग स्टेटस क्वो हैज बीन पॉजिटिव as it has allowed self-help authors to publish extremely similar material. I mean, this is not at all relevant. You could have eliminated D option at the very first glance, because अगर self-help authors अपनी book, first of all, this is not about self-help, okay? The question is about self-publishing. So this is the very first reason to eliminate this D option. But even if it was true, it would not have made sense, because publishing, ये जो positive point है, ये positive है ही नहीं. If self-help authors are allowed to publish extremely similar material, then it is not a positive point, it's a negative point, right? So D goes out for that simple reason. C says Speaker C believes that de-establishing the publishing status quo has been negative, as it has opened the door for many lower quality books which do not deserve to be published. This is absolutely correct. ऑप्शन सी करेक्ट है. बट द ओनली प्रॉब्लम विद दिस सी ऑप्शन इज दैट यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव पॉइंट कवर हुआ है, पॉजिटिव पॉइंट कवर नहीं हुआ है. स्पीकर सी ने पॉजिटिव साइड भी बताई थी, नेगेटिव साइड भी बताई थी, एंड दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू चूज ऑप्शन सी एज एन आंसर.
ठीक है, ऑप्शन बी पे जाते हैं. स्पीकर सी believes that while de-establishing the publishing status quo is a positive step, this has opened the door for self-help authors who publish extremely similar material. Right? B भी आंसर नहीं होगा. Most of you guys have chosen B as the correct answer, but I hope this is clear now because question self help के बारे में नहीं है, question self publishing के बारे में है. Right, this is about self publishing, not about self help, right? So B again gets eliminated. Right, option A is going to be the correct answer, that speaker B believes, speaker C believes that while de-establishing the publishing status quo is a positive step, this has opened the door for many lower quality books which do not deserve to be published. So इसमें positive point भी cover हो गया है और negative point भी cover हो गया है. Both the points are getting covered, and that's why we can easily choose option A as the correct answer. I hope this is clear to you guys. Yes, yes, Ishika. I hope it's clear now. Okay. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. व्हाट डिड यू गाइज चूज फॉर दिस वन? क्या आंसर लिखा है क्वेश्चन 3 में? व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट इट? यस, एनीवन? ओके प्रेरणा, ओके शुभश्री, ओके खुशबू, आयुष, तारीशी. फाइन. सो आई थिंक पीपल आर डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी. कुछ लोगों ने ए चूज किया है, कुछ लोगों ने बी चूज किया है. फाइन. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है. सी, हाउ डज स्पीकर ए फील टुवर्ड्स दोज हु आर पब्लिशिंग सेल्फ हेल्प बुक्स? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ही बिलीव्स दैट too many people are publishing self. Okay, now we have C as well. Great, excellent. Option A says he believes that too many people are publishing self-help books without the qualifications to back their writing up. See, यहाँ पे जो qualifications की बात हुई है ना, these qualifications are not at all being talked about in the passage. Just go to the passage once. Right, and tell me if speaker A has anywhere talked about the qualifications that these people need. Right, आप ये word पे मत जाओ. ये जो line है ना, the line that says that anyone who treats it that way certainly is not qualified to write a book on how to help people. यहाँ पे ये literal qualification की बात नहीं हो रही है. Right, they are not literally talking about the kind of qualifications or the educational qualifications that they need to write a book. यहाँ पे तो speaker A सिर्फ इतना सा बोल रहा है कि we certainly are not one size fits all, and anyone who treats it that way certainly is not qualified to write a book. सो ऑथर सेज कि अगर किसी को इतना भी समझ नहीं आ रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स यूनिक है और कोई भी एक बुक सारे ह्यूमन बीइंग्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, सो अगर किसी ऑथर को इतना भी समझ नहीं आ रहा है तो वो केपेबल ही नहीं है बुक लिखने के ऑन हाउ टू हेल्प पीपल. राइट, सो he is talking about capability. He is not talking about literal qualifications that these writers need. Okay, so A option क्या बोल रहा है? A option says that he believes that too many people are publishing self-help books without the qualifications to back their writing up. ऑप्शन ए में लिटरल क्वालिफिकेशंस की बात हो रही है जो पैसेज में कहीं पे भी मेंशन नहीं है. किसी भी लाइन में, किसी भी पैराग्राफ में दे आर नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट क्वालिफिकेशंस. ओके, हेंस ए ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड. जितने भी लोगों ने ए ऑप्शन चूज किया है, आई होप इट्स क्लियर नाउ कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है. ठीक है, ऑप्शन डी की बात करते हैं. बिकॉज ऑप्शन डी किसी ने चूज नहीं किया है, आई जस्ट वॉन्ट टू एलिमिनेट इट एट द वेरी फर्स्ट ग्लांस. He is uninterested in self-help books which are written by people who have no university qualifications in the subject. University qualifications की तो बिल्कुल भी बात नहीं हुई है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की तो बात हुई ही नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशंस की तो बात बिल्कुल भी नहीं हुई है. सो डी गेट्स आउट एट द वेरी वेरी फर्स्ट ग्लांस. यू कुड हैव एलिमिनेटेड इट सबसे पहले ही. राइट, सो डी गेट्स आउट एट द वेरी फर्स्ट ग्लांस. अब बचते हैं बी और सी.
सी क्या बोल रहा है? He does not care about the content of self-help books which are written by people looking to make a cheap buck. cheap buck यानी क्या होता है? कुछ पैसों के लिए जो सेल्फ हेल्प बुक्स लिख देते हैं. So, what option C says is that स्पीकर ए को सेल्फ हेल्प बुक्स का कंटेंट अच्छा नहीं लगता है. क्यों? क्योंकि ये लोग कुछ पैसे कमाने के लिए सेल्फ हेल्प बुक्स लिख देते हैं. बट इज दिस समथिंग दैट स्पीकर ए टॉक्स अबाउट? नो. स्पीकर ए पैसों की बात या ऐसी कोई चीज़ों की बातों पे फोकस नहीं कर रहा है. ही माइट हैव टॉक्ड अबाउट इट फॉर अ वाइल बट ही इज नॉट फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट. उसका मेन पॉइंट क्या है? What is the main point given by Speaker A? Speaker A says, if you guys remember that line, that any Tom, Dick and Harry can write a book, a self-help book, right? So वो ऐसा बोल रहा है कि self help books तो कोई भी लिख देता है. But why do we need self-help books? Why would we need anyone to suggest us that how to brush our teeth or when to wake up and what to do after waking up? All these things are just, not necessary for us to be, understood. ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमारे लिए काम आ सके. So when he says that any Tom, Dick and Harry can write it, हम इससे क्या समझते हैं? That anyone can write it. जो लिखते हैं उन्हें ये कुछ भी नहीं समझता है. Whom he considers to be nobodies. Because जब भी आप बोलते हो that any Tom, Dick and Harry can do it, आप क्या बोल रहे हो कि वो लोग मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखते हैं. They are not important people. Right? Anybody can write it. They are nobodies. Right? They are not important. And that's how you end up choosing B option as the correct answer. Yes, I hope it's clear to you all. जिन लोगों ने A या C choose किया था, I hope it's clear. Can I please have a yes in the chat box? And I also want to know कि कितने लोगों के 3 on 3 correct हुए? किसी के सारे तीन all 3 questions correct हुए? Anyone who got all of them correct? Yes? Just drop a yes in the chat box if that is the case. 2 on 3, very good. Excellent. 2 on 3 is still a very, very good score. What about others? कितने correct हुए 3 में से? 2 on 3, good, very good. Okay, fine. Good. I hope you guys understood this passage and I hope you guys keep these things in mind. जो भी हमें learnings मिली आज के session में about cracking a fact based passage. अगर आपको ऐसा passage एग्जाम में आता है, just keep this one thing in mind कि आपको जब भी passage read करते हो, you need to keep certain facts in your mind. जो भी आपको important information लगती है वो पहले से mind में capture करके रखो, right? Because you won't be having the chance to underline anything, right? So the only way through which you can remember information is capturing that information in your mind. Okay, so जैसे जैसे passage read करते जाते हो वैसे वैसे चीज़ों को याद रखते जाओ. You don't have to remember every single thing. You just have to remember the most important elements of every single paragraph that's being kept in front of you. Okay. So do that, and if you do that, you'll find it very very easy to attempt most of the questions in the limited span of time. हर question के लिए आपको बार बार passage पे नहीं जाना पड़ेगा. Okay, and you can definitely encounter such passages in your exam. So be prepared for any surprises, for any kind of surprises, right? Because if it's going to be difficult for you, then it's going to be difficult for every single student. So you don't have to worry about it at all. I just hope that you guys are constantly giving mocks. I just hope that your preparation is going good, going well, and I hope you guys are having much confidence to crack the upcoming examination, right? You guys are not left with many days, so please give your best. And I hope you enjoyed today's session, and I'll see you soon. Yeah, till then, take care of yourselves and make sure to practice at least a few passages on a daily basis. Okay. Thank you so much, guys.
Bye bye. Take care. And I hope you enjoyed the session. Take care, guys. Bye bye. Thank you so much.